हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डे 2 इन गुजरात। वी आर करंटली इन द्वारका एट द सेम होटल जो मैंने कल दिखाया था। एंड द टाइम इज़ अबाउट 7:45। अभी नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। वी आर लिविंग नाउ। वी आर मेनली गोइंग टूवर्ड्स सोमनाथ, लेकिन बीच में हम और भी स्पॉट्स करेंगे। दिस वाज द व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द होटल। So our first spot of the day would be the sunset point at Dwarka. तो फर्स्ट स्टॉप हम लोग ने अभी लिया है भटकेश्वर महादेव एट सनसेट पॉइंट इन द्वारका। एंड मैं अभी आपको प्लेस दिखाऊंगा। इट लुक्स वेरी नाइस। मैं गोवा से हूँ, लेकिन यहाँ पर भी फिर भी बीच पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। They say that the water rises up till here and पानी ऊपर तक आता है। So during heavy monsoon it looks like फिर सागर देव महादेव का अभिषेक कर रहा है, ऐसा लगता है। So yeah, it's wonderful. You should come here. Chalo, with the first spot done, let's move on to the next location for today. A few inches later. Second spot of the day is Rukmini Devi ka Mandir. This spot is hardly 4 kilometers from our previous location, so बहुत ही नज़दीक है. If you are around here, I highly recommend you to do both these spots. इस स्पॉट से एक्चुअली श्री द्वारकाधीश मंदिर भी दिखता है, जस्ट दैट माई कैमरा कुडंट फोकस इनफ टू कैप्चर दैट, बट या यहाँ से भी आपको श्री द्वारकाधीश का टेम्पल दिखता है। सो द सेकेंड स्पॉट फॉर द डे इज़ डन। वी आर मूविंग एट द थर्ड लोकेशन, दैट इज़ श्री नागेश्वर महादेव टेम्पल। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। वन एडवाइस हियर, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट आपको ज़्यादा रश नहीं मिलेगी एट दिस प्लेसेस।
both the temples, both the places we went to were covered hardly in 5 to 10 minutes. So you can imagine the time you can save at these locations. Minutes later. And here we are at our third location for the day. जस्ट टेंपल के पीछे यहाँ पे ये पानी रुका हुआ है एंड यस आज सोमवार है फिर भी कुछ भी यहाँ पे क्राउड नहीं है सरप्राइजिंगली। तो हो गया आज के दिन का थर्ड डेस्टिनेशन नागेश्वर मंदिर के दर्शन एंड अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सोमनाथ। So done with the third destination for today. Now we are leaving Dwarka to head towards Somnath. While on the way, we are also going to do some more destinations. So it's going to be a long video, so stick till the end because I don't want you all to miss out on anything. So in many places, you might have noticed that I have just shown the travel part and the entrance to the temple or the location and nothing at all. I just skipped the location. Well, I have not skipped the location. The thing is, at many places, videography and photography is not allowed. One hour later. The first stop after leaving Dwarka was Har Siddhi Mata Temple. One hour later. And the fifth spot for the day is Mool Dwarka.
सुबह सुबह उठकर इतने सारे डेस्टिनेशंस करने के बाद मैं तो थक गया रे बाबा. I am going to take a quick nap now. See you in some time. A few inches later. After that pretty short nap, we are at Honest for lunch. And honestly, the food was okay. I didn't quite like it that much. Oh yeah, we are entering Porbandar now. और टेम्पो रेडी है हमें ले जाने के लिए टू आवर नेक्स्ट लोकेशन. बट बिफोर दैट So now we have entered Porbandar and currently we are heading towards Sudama Dham, our sixth location for the day. So now we have entered Sudama Mandir and location बहुत ही सुंदर है. It is located right between the city, but when you enter, it looks like you are in a different location altogether. Now we are heading directly to Somnath and अभी कार वहाँ पे है. So Porbandar to Somnath is about 130 kilometers and it takes about 2 hours 30 minutes. It's a straight long highway and you know what I'll do here. Good night. मैं तो सो रहा हूँ. मिलते हैं थोड़ी देर में. वेलकम टू सोमनाथ. और मैं जिस तरह से वो गाड़ी में सोया हूँ वो बेड पे, अब जस्ट वोकन अप, बैग्स अंदर डाले अभी एंड या आई कीप यू गाइस अपडेटेड ऑन क्या हो रहा है अभी. उससे पहले हमारा रूम तो देखो. सिंपल सा रूम है बट इट इज़ स्पेशियस, इट इज़ ह्यूज. Even the corridors in this hotel is huge. Ten minutes later. So the time is 7:45 right now and we are heading towards Somnath Mandir. And I hope थोड़ा यहाँ पे लाइट रह जाए क्योंकि कुछ शॉट्स मैं ले सकूँ. बट या लेट्स गो. मैं दौड़ रहा हूँ बिकॉज रिक्शा हमारे लिए रुक रही है.
So as the case with most major temples, phones, bags and other electronic items were not allowed inside. So I had to keep my phone, camera and my bag in the locker. So I took whatever videos I could took from outside. But yeah, I hope you all enjoyed this video. If you're watching this video till here, till now we have visited 7 different locations in one video. So I hope you all liked it. Please do share this video with your friends, your family and comment your thoughts about these locations and this video in the comment section below. And I will see you in the next video. And yeah, one last thing. Subscribe if you haven't already because there's day 3 and day 4 of Gujarat coming your way. Thank you so much for watching and peace out.